Hi Oakville, I'm Firefighter Sumeet Gill. This holiday season, as we spend more time indoors with friends and family, it's important to protect everyone from carbon monoxide, a gas you can't see, taste, or smell. It's often called the invisible killer. You've always been required to have a working carbon monoxide alarm outside each separate sleeping area if your home has a fuel-burning appliance, fireplace, or attached garage. But starting January 1st, 2026, the Ontario Fire Code will require a carbon monoxide alarm on every story of your home. If the alarm sounds, it's an emergency. Carbon monoxide may be present. Get outside to fresh air right away and call 911. Test your carbon monoxide alarms at least once a month by pressing the test button. From all of us here at Oakville Fire, stay safe and have a great holiday season. Now, I'll say this in Urdu. Oakville में सब रहने वालों को मेरे तरफ से सलाम. मैं फायर फाइटर सुमीत गिल हूँ. छुट्टियों की दौरान जब आप ज़्यादा वक्त अंदर गुजारें अपने घर वालों के और दोस्तों के साथ, यह बहुत ज़रूरी है कि आप सबको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से बचा के रखें. एक जो चीज़ आप देख नहीं सकते, चख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, इसको कहा जाता है खुशी दा कातिल. हर सोने वाले कमरे के बाहर कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म लगाना है. January 1st, 2026 से Ontario Fire Code कहता है आपके घर के हर मंजिल पर कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म की ज़रूरत होगी. अगर अलार्म बजने लग जाए, आपने वो जगह खाली कर देनी है और बाहर जाना जहाँ पे ताज़ा हवा हो और 911 पर कॉल करना. हर महीने एक दफ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म टेस्ट बटन दबाकर देखना ये सही काम कर रहा है या नहीं. हम सब यहाँ ओकविल फायर से छुट्टियाँ की मुबारक देते हैं.